जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 541st episode of live analysis. So today we will discuss the trading plan for our markets for tomorrow's session. And before I proceed, let me remind all the people that next training is scheduled on April 16th and 17th. So if anybody is interested to join our training program, you can WhatsApp on this number. You can register yourself, and once you register, you will be added in the Telegram group for a period of 3 months. And please subscribe to this new channel. Subscribe करें, share करें, like करें, comment करना ना भूलें. Okay, so let us start today's session. आज का दिन वैसे काफ़ी interesting था because lot of things happened in the equity market. Stock specific action काफ़ी था. Commodities market में natural gas has shot up 20 points. So crude में काफ़ी सारे अच्छे trades थे. फॉरेक्स में आज जो है काफ़ी अच्छा एक स्टेबलाइजेशन होता हुआ दिखाई दिया. सो आई थिंक टुडे वाज अ गुड डे. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द ग्लोबल मार्केट. सो S&P 500 इज फ्लैटिश. Nasdaq जो है ये 0.5% डाउन है. जर्मन डैक्स इज डाउन बाय 1.5%. सो ग्लोबल मार्केट्स after yesterday's strong surge, today we are seeing some sort of reaction. Today we are seeing some sort of a small pullback. Nevertheless, जो हमने कल और परसों डिस्कस किया था, especially about the US market, that it is respecting previous day's bottom and every day it is trying to inch higher. So जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता है, जब तक कि एक कन्विंसिंग एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म नहीं होता है, you should not short these markets. Overall, this rally should terminate somewhere here. We are already approaching the resistance zone, but from a shorting perspective, from a practical perspective, do not initiate a short unless there is a reversal. Now, the same thing I would like to tell people trading Nifty and BankNifty, because what is going to happen is two things are going to happen in the our equity market. Number one, if markets continue to remain bullish, there will be a late surge of FOMO. There will be a late surge of FOMO, and initially what will happen is people will keep shorting the market. ठीक है, तो मैं निफ्टी के सेक्शन में डिस्कस करूंगा about this, both these things. Okay, but this is going to be a theme for next few days, maybe for next 1 week or so. ठीक है, so there will be late surge in FOMO and people will keep shorting index and index will keep going higher, but in a very specific manner. So that's about the equity market update on the global front. Let us take currencies. So we can see sorry, we can see the US dollar again. It is trading lower and no change in the view. US dollar में जैसा पहले हमने discuss किया है that I don't see US dollar breaking this level, and even if it goes down it will come once again. So overall US dollar जो है इस पूरे बैंड में ही मैं देख रहा हूँ without any decisive break on either side. Now, the euro and the British pound, they have moved up very nicely, especially the euro. And if you remember, a couple of days back, I was talking about how the euro is in its last move and euro should start to move higher. And yesterday we got that spike. So today we have almost reached the resistance level on the euro, but I think it will continue. I don't think it is going to pause. I think very well it can continue to some more higher upsides towards 1.29 or towards 1.3. So I'm bullish on euro and I expect the euro to keep moving higher. These are tough zones, these are resistance zones, but I think it will navigate through these resistances and reach at least this level of 1.29. The same thing can be said about British pound. So today we have seen a very nice surge in the British pound. It is reversing last 4 5 sessions of downtrend, and if you remember, this is precisely the support level that I spoke about on the British pound. So we have started the reversal on the higher side. Overall, I think we have made a good bottom structure, and I think British pound is all set to move till 1.335 in the next couple of weeks. So it's buy on dip. Any dip that comes in the British pound, it is a complete buy with this level as a stop loss. So this is also very bullish.
Now, some decent correction has started to happen in the USD JPY, the Japanese yen dollar pair, and this is some relief. And we have also seen a good up move in the JPY INR pair. So, what does it mean from a bigger perspective? So, let me just open the weekly chart of this currency. Let me open the monthly chart first. And if you look at the monthly chart, the USD JPY pair has reached almost a 20-year high, and this is the level which is seen almost as a potential top. It never sustains above this level, and the last time it sustained was in the 90s, and this is the level you can see. And then once more it sustained in the early 2000s, but hardly it has managed to stay above that level. Okay, so this is a very big hurdle. $125, it's a very big hurdle, and I think it will still hold on to this level, and it should start some sort of correction. Okay, and also one more thing is that whenever you have a big move in the forex market in a single month or in a single like week, it tends to go sideways, it tends to correct time wise, so that also offers lot of opportunity. वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ बेरिश पिन बार रिवर्सल, बट वी नीड the follow through to happen. So अगर ये मंडे ऑनवर्ड्स लाइक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स अगर ये फॉलो थ्रू देता है तो इसमें अच्छी मूव हमें देखने को मिलेगी. So having said all this thing, what are the plan for our NSE forex futures? Let us uh, discuss that. So first pair is your USD INR. So today we got a big gap down opening in the USD INR market, and it broke the 76 level also, right? So USD INR right now I would say it is bearish, and 76.5 is a very strong resistance. So this is bearish. It's a sell on rise for a target of, you can say, 75.5. Second pair that comes to my mind is Euro INR. So Euro INR has turned bullish thanks to the strength in the Euro USD. So Euro INR is still bullish, and I think we have a very good base at 84 level, and some resistance should come near 85.25 tomorrow. So this is a pair where right now I think in only intraday trading can be done. Overall, we have to avoid, like we have to wait for a good dip to come. Okay, and then we can play for higher targets for like 85 or 86. Okay, so right now there is no trade as such. Maybe intraday you can get some trade. Then the third pair is your GBP INR. So this has made a very nice comeback today, and it has held the 99.5 level. So I think British pound, any dip that comes today, it has managed to close I think at 100.15 or something. So any good dip that comes on British pound, now it's a buy. So it's a buy, and you can keep just under this as a stop loss. And let us go with a target of say 101.5 positionally. So now British pound can be bought, buy on dips, buy on good dips. 99.5 is a stop loss target, 101.5. And the fourth pair is JPY INR. So I think JPY INR has also made a good bottom, but this can give one dip suddenly. ठीक है, तो इसमें एक चीज हमें समझनी होगी कि 61.5 ये जो एक लेवल है 61.5, that is a very good support. Okay, so wait for like 50 to 70 पैसे सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन. अगर इसमें डिप आता है तो हम इसको बाय करेंगे, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का बॉटम है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंड टारगेट विल बी 63.25. ठीक है, सो ये व्यूज हैं करेंसी मार्केट में. एंड ओवरऑल I think now the volatility should come under control, and now I think we are back to active trading in the currency market. ठीक है, सो USD INR अच्छे से एक ट्रेड सेटअप यहाँ है. यूरो में इंट्राडे कुछ मिला तो कर सकते हैं. GBP INR और JPY ये दोनों ठीक हैं इस वक्त. Fine. So that's the update on the forex market. Now let us
हैव अ लुक एट द कमोडिटीज मार्केट. सो कमोडिटीज में हम देख रहे हैं कि आज सारी कमोडिटीज ग्रीन में है and all the commodities are trading well on the positive side. So let us take first natural gas, क्योंकि natural gas में बहुत ही simple trade setup जो कल मैंने एक बताया था कि अगर 400 आता है 390 या 400 के स्लैब में तो हमें बाय करना चाहिए. And we have also broken the yesterday's high. So 420 was my target for intraday, and I think many people have booked the profit. Now what is interesting is the intraday chart of natural gas. This is very very encouraging and very beautiful. So if you look at the intraday chart of natural gas, since morning there was a gap down opening, right? It hit the 399 level, and since then it is trading above the VWAP. There was one pullback here that was also bought, and then there were three attempts to sold to sell the natural gas, but again it protected the VWAP consecutively. And this is 30-minute time frame, which is a very robust time frame for intraday trading. And then exactly at the evening session we got that breakout. So fantastic, बहुत ही शानदार प्राइस एक्शन है. दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन जो ट्रेडर्स को एक हेल्दी ट्रेड सेटअप लेने के लिए ये आप ये दिस इज व्हाट यू सीक in a good setup. You have a reversal technicality, then you have first up move, then you have the consolidation or the correction, and then the breakout. This 1 2 3, this is a very nice setup. Now here, right now as I speak, it is still negotiating with the supply that came over here. So it is still negotiating with the supply of 420 424. So don't initiate any fresh trade over here, because you will have to carry, and I don't think it is wise to carry a trade. But suppose if you can take risk, if you have like earned in the previous trade and you want to play with the house money, then probably if natural gas is closing say above 422, then you can take a long trade with a stop loss of 406. That is the only trade. Or else just wait, and probably tomorrow again इसमें आपको कोई trade मिल जाएगा. ठीक है. So that's the update on the natural gas. Now let us take a look at the crude oil. So crude में क्या हालचाल है? crude में जो है सुबह एक लॉन्ग ट्रेड इसमें मैंने दिया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है. 7950 से ये जो लॉन्ग ट्रेड था ये भी बहुत अच्छे से चला है. सो क्रूड में राइट नाउ सम पुल बैक इज कमिंग. नाउ मेनी पीपल आर ट्राइंग टू शॉर्ट क्रूड ऑयल, एंड मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है. ओके. नाउ वाई? बिकॉज यू सी क्रूड इज एट अ माइनर रेजिस्टेंस ऑफ दिस डाउन ट्रेंड, जो कि यहाँ से शुरू हुआ है. But if you see, after 4 days of negative, 4 days of bearish candle, we are making a bullish candle. So this is something which is slightly positive in my opinion. Okay. And we have also managed to cross the previous day high, and the yesterday's high was around 8200, and we have crossed that intraday. And considering the fact that yesterday it fell almost till 7500, so this is a like a very huge rally. Okay. So I think crude को यहाँ पे short नहीं करना चाहिए. You need lot of luck. अगर कोई न्यूज़ वगैरह आएगा तो ही क्रूड गिरेगा. आई थिंक ये सुबह से ये बात मैं ग्रुप में भी मेंशन कर रहा हूँ. सब लोग शॉर्टिंग के पीछे हैं. क्यों शॉर्ट कर रहे हो? कोई यहाँ पे वीकनेस नहीं है एज सच. ठीक है. सो क्रूड में इस समय आज के लिए मैं समझता हूँ कोई ट्रेड अभी नहीं बचा है. ओके. एंड वी हैव 1 hour टू क्लोज, बट आई थिंक इस समय कोई ट्रेड अब है नहीं. मे बी 100 पॉइंट ऊपर नीचे ये भले ही कर सकता है. ओके. नाउ फॉर टुमारो सेशन वन थिंग इज वेरी क्लियर कि कल देखिए अगर क्रूड ऑयल हमें 8100 के ऊपर दिखाई देगा तो हम क्रूड को बाय करेंगे. ठीक है. अगर ये इसके ऊपर दिखाई देगा तो हम क्रूड को बाय करेंगे, 81 के ऊपर बाय करेंगे. बट आपका स्टॉप लॉस जो है थोड़ा वाइड होगा. तो योर स्टॉप लॉस इन दिस केस विल बी 7900. ओके. एंड द टारगेट विल बी ऑल ओपन टिल फर्स्ट टारगेट में 8600 रखूंगा, एंड सेकेंड टारगेट 8900 9000 का स्लैब होगा. सो दिस ट्रेड, अगर ये लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे मिलता है तो दिस वुड ऑल्सो मीन दैट वी आर लाइक वी हैव एंडेड दिस करेक्शन सॉर्ट ऑफ, ये जो करेक्शन था. ओके. एंड probably we are shooting higher. This would also mean that we are negating this resistance. Okay.
which was made here. So if we start to shoot higher, if we cross that 8400 level, then this would also mean कि ये पूरा जो एक probably ये एक triangle breakout है, probably fresh एक अपमूव शुरू हो रहा है क्रूड में, एंड प्रॉब्ली सम न्यूज कैन कम फ्रॉम जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड. ओके, सो इस बात का ध्यान दें कि क्रूड में मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग. Crude, if like doesn't sustain at higher level, suppose it goes up, okay, it takes resistance near this 8350 8400, वहां से अगर रिवर्सल करता है तो अगेन इट कैन फॉल टिल हियर, बिकॉज ये पूरा विंडो जो है ओपन है. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन क्रूड ऑयल. इट कैन गिव बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट. Right now, whatever I see on my screen, I think above 8100 it will be a bullish trade to take, with 7900 as a stop loss. First target 8400, second target 8600. Once we are through the 8400 resistance, तो positionally जो ये 9000 वगैरह का जो टारगेट्स है ये ओपन हो जाएंगे. ठीक है, सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड clearly how to deal with crude oil. Next we can take gold. So yesterday gold में भी मैंने एक long trade dollar के terms में बताया था. So that has also moved up pretty nicely. I think 600-700 points की इसमें bounce हो चुकी है. So I think you can book the profits if you wish right now, or you can carry the trade. So अगर डॉलर के टर्म्स में देखें तो 1932 पे ट्रेड हो रहा है, and it's a very fantastic comeback by the bulls. And on, I believe if you can afford, you should uh, hold this trade. So we have a very nice retest of the 65-day moving average, and we also have a very nice false breakdown. So this is something that I explained yesterday कि ये अगर क्रॉस कर लेता है वापस ये 1925 को, तो ये बहुत अच्छा एक फॉल्स ब्रेकडाउन आएगा, कंसिडर में आएगा, एंड देन दिस कैन सेट द स्टेज फॉर अ वेरी बिग रैली टुवर्ड्स द 2040 लेवल्स. तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चांस लेना चाहिए. दिस इज अ वेरी नाइस सेटअप दैट वी हैव राइट इन फ्रंट ऑफ अस. ऑब्वियसली थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह बड़ा है, आपका स्टॉप लॉस जो है ये 1880 के आसपास है. बाकी कमोडिटीज में इस समय कोई अपडेट नहीं है. सो आई वुड नॉट लाइक टू टच द मेटल्स एंड ऑल दोज थिंग्स. मेटल्स वगैरह काफ़ी बुलिश हैं, ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं. बिटकॉइन की बात करते हैं, 47,300 के लेवल पे है. सो टुडे वी आर सीइंग सम पुल बैक इन द बिटकॉइन. ओवरऑल whatever I have explained in last videos, those views are still valid for Bitcoin and Ethereum markets. Okay. Now let us come to stock market, which is Nifty and Bank Nifty. एंड दोस्तों एक और बार रिमाइंड कर दूं कि नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है दैट इज शेड्यूल्ड ऑन April 16th and 17th. Any of you is interested, you can WhatsApp and you can join for this one, and you can become a part of our स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप. ऑल राइट, सो निफ्टी में आज क्या हुआ और निफ्टी में अब आगे की क्या संभावना है. तो देखो बहुत ही सिंपल सा, पहली बात तो प्राइस एक्शन है. नंबर वन, टुडे व्हाट हैपेंड, वी ओपन गैप अप अबाउट 17,350 which is a very good sign, and just around 1:30 to 2 p.m. there was one short signal, but there was no follow through. So very happy that we exited. Now कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यही मिस्टेक सब लोग करने वाले. नंबर वन, यहाँ पे व्हाट इज द बिगर व्यू ऑफ निफ्टी. द बिगर व्यू is now very simple and everybody now knows this, that this is the resistance that everybody is watching. हम बहुत पहले ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने इस पूरे डाउन ट्रेंड को बहुत ही शानदार तरीके से डील किया है पिछले 6 महीने में. So initially we started talking about this, and now everybody on the planet is talking about this chart, and everybody is expecting that Nifty will go towards 18,000 level etc, which it can go. इसमें कोई भी denial नहीं है. Okay, now यहाँ पे couple of things are possible, and we have to be uh, cognizant of few things. Number one, look at the way last 3 sessions have unfolded. ठीक है, ये जो लास्ट 3 सेशन है ना, ये बहुत सारी बातें मुझे बता चुका है ये मार्केट. ठीक है, द लास्ट 3 days ऑफ प्राइस एक्शन हैज whispered lot of things about what is coming next. Now number one, there can be a melt up. Now melt up generally
करेक्टिव वेव में नहीं होता है, मेल्टअप एक जो है एक बुलिश फेज में होता है. सो दिस वाज द मेल्टअप फेज. सो विद इन अ लार्जर करेक्टिव फेज वी कैन हैव अ मेल्टअप फेज. मेल्टअप का मतलब है कि प्राइस रोज गैप अप के थ्रू मूव करेगा एंड इंट्राडे इट विल डू नथिंग. ठीक है. सो एज यू कैन सी the previous instances, as you can see here, this was a melt up phase where Nifty rallied from almost 17,800 to 18,600. 800 point की rally, you see every day there was gap up, gap up, gap up, and so on and so forth. So ये एक possibility है कि probably we will move till the 18,000 region in this manner. ठीक है. देखो ट्रेंड सबको पता है बुलिश है, हर बच्चे को पता है ट्रेंड बुलिश है, सबको पता है कि ऑब्वियस टारगेट 18,000 यहाँ पे लग रहा है. ठीक है. बट कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता है तो आप गलतियां नहीं करोगे. आज मुझे पता था कि काफी लोग जो है शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करके जाएंगे, इसीलिए मैंने एडवाइस भी किया कि देखो शॉर्ट मत करो. इंट्राडे कर रहे हो, कोई सेटअप दिख रहा है, स्टॉप लॉस लगाओ, काम करो, ठीक है. स्टॉप लॉस हिट तो एग्जिट, प्रॉफिट मिला तो भी एग्जिट. बट पोजिशनल उस चक्कर में मत पड़ना कि मार्केट को मुझे शॉर्ट करना है, क्योंकि मार्केट अगर मेल्टअप वाले फेज के थ्रू मूव करता है तो आप 17,500 से आप 18,000 18,100 तक शॉर्ट करते रह जाओगे. एंड यू मे नेवर नो दैट मार्केट इफ इट ब्रेक्स आउट तो क्या होगा. ये मार्केट भयंकर शॉर्ट्स को ट्रिगर कर देगा जो सिस्टम में बिल्ड होने वाले हैं. एंड प्लस पीपल हु हैव नॉट बीन अ बायर, ये यहाँ पे बाइंग शुरू कर देंगे एंड दिस कैन ट्रिगर अ होल न्यू सेट ऑफ मार्केट. ठीक है. इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लेट सर्ज इन फोमो और दूसरा शॉर्टिंग. तो ये बात को समझना है, क्योंकि इस मार्केट को यहाँ से अब आप साइकोलॉजिकली ही डील कर सकते हो. अगर आप साइकोलॉजिकली समझ सकते हो तो ही आपके लिए ये एनालिसिस फ्रूटफुल होगी, और एल्स कोई इसका फायदा नहीं होगा. ठीक है. सो नंबर 1, मेल्टअप फेज के थ्रू बाजार 18,000 तक जा सकता है. उसके बाद अगर ये कंटिन्यू करता है तो फोमो ट्रिगर हो जाएगा और भयंकर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट जो है बहुत ही बिजार एक एक बहुत ही वायलेंट रूप ले सकता है. ओके. एंड नेवर अंडर एस्टिमेट दीज मार्केट्स. हो सकता है मार्केट यहीं से कल के दिन गिरना शुरू हो जाए. ठीक है. बट नेवर अंडर एस्टिमेट और नेवर इग्नोर द सिनारियोज दैट माइट अनफोल्ड. ठीक है. अब इस मार्केट को अप्रोच कैसे करना है, ये तो हो गया दो चीज कि पोटेंशियली इस तरीके का हो सकता है. अब यहाँ पे दूसरी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट जो है ना, मार्केट सरप्राइज करेगा. ठीक है. किसको सरप्राइज करेगा? मार्केट दोनों को सरप्राइज कर सकता है, बुल्स और बेयर्स. अब कोई कहेगा कि ये तो केजरीवाल वाली बात है. ठीक है. दोनों साइड का बात कर रहे हो, तो बात दोनों साइड की नहीं है, बात है कॉन्टेक्स्ट को समझने की. सरप्राइज का क्या मतलब है? जब मार्केट यहाँ आएगा, सबको पता है मार्केट यहाँ पे आने वाला है, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे आने लगेगा, मार्केट में सब लोग शॉर्ट करना शुरू कर देंगे. ठीक है. लॉन्ग्स यहीं पे काटना शुरू कर. सो दिस इज समथिंग which is very obvious, and market never does anything which is very obvious. So what does market do? Market either overextend or market undershoots. ठीक है. तो यानी ये जो अपमूव है, ये या तो यहीं कहीं से रैंडमली किसी दिन, किसी समय, किसी क्षण जो है रिवर्स हो जाएगा. ओके. या फिर ये एक्सटेंड करता रहेगा. ओके. सो इसलिए मैंने कहा कि मार्केट सरप्राइज करेगा. बुल्स ये भी नहीं मान रहे हैं कि मार्केट जो है ना न्यू हाई पे जाएगा. ये बस बोलने वाली बात है. जैसे ओवैसी यूपी में इलेक्शन लड़के 100 सीट पे बोलता है मैं जीत जाऊंगा, उसको एक भी वोट नहीं मिले. ठीक है. सो इट्स लाइक ब्लफ. ओके. इट्स लाइक पोकर, ब्लफ मार. तो बुल्स को भी अंदर से पता है कि मार्केट जो है बहुत ऊपर नहीं जा सकता, और बेयर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं इस समय. सो इन दोनों का जो जब एक कॉम्बिनेशन होता है ना मार्केट में, तभी बड़ी दुर्घटना घटती है. ओके. ऑन बोथ साइड इट हैपेंस. सो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी मार्केट के साथ बदतमीजी ना करें, मार्केट को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो. और अब मैं आता हूं दूसरे पार्ट में कि कैसे मार्केट को डील करना है, या ऐसे सिचुएशन में कैसे हमें डील करना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी को कैसे मैनेज हमें करना है. उसका सबसे पहला चीज है, एक चीज देखो कि ये मार्केट को मैं इस तरीके से क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, बिकॉज we have not seen a pullback. We have not seen what? We have not seen a pullback. हमेशा देखो जब भी मार्केट बिना पुलबैक के
चलता है तो दो ही चीजें होती हैं, आइदर इट विल एक्सटेंड बियॉन्ड everybody's expectation or abruptly it will end in a very drastic manner। ये देखो ये भी था ना, बिना पुल बैक के काउंटर रैली, बिना पुल बैक के। सो सबसे पहले यहाँ पे जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई रिमेंबर दिस 17,200 एज अ चैनल रेजिस्टेंस, just like we are expecting this as a resistance, and what happened later on, market surprised big time। So that same thing which has happened here, okay, can happen here on a larger degree। ठीक है, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं दूसरे पहलू पे कि किस तरीके से मार्केट को डील करना है। तो नंबर वन, जब तक मार्केट एटलीस्ट 17,350 जो हमारा वीकली मॉब लेवल रहा है पिछले 2 हफ्तों से, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, दिस मार्केट इज अ बाय ऑन डिप मार्केट। इस मार्केट को शॉर्ट ना करो जब तक कि कोई रिवर्सल ना दिखे। ओके, उस चीज का ध्यान देना। सो मार्केट इज अप till it is holding the 17,350 level and expected targets जो हमने पहले दिए हैं 17,777, this is my very very sweet target, I think it should come very easily। ये तो डन है। अब इसके बाद फिर हमें देखना होगा कि कहाँ तक जा रहा है। दूसरी बात, every day market is respecting the previous day bottom, this means market जब तक इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करता है, आप कोई भी पोजिशनल शॉर्ट इनिशिएट करोगे तो इट जस्ट अ गैम्बल। ओके, सो ट्रीट इट विद कॉशन, पोजीशन साइजिंग वगैरह जो है थोड़ा सा देख के चलना, एंड ऑलवेज बी अलर्ट बिकॉज आई सस्पेक्ट दिस मार्केट इज गोइंग टू एक्चुअली सरप्राइज most people in the most unexpected way and that includes me myself also। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इसके जो फंडामेंटल और जो मैक्रो पहलू हैं ये मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नाउ रही बात कि कल कैसे हमें ट्रेड करना है, सो टुमारो इज द your quarterly closing, financial year closing, and all those things are going to come, right? So how we will deal tomorrow session, I think tomorrow again there should be gap up opening and market should again move in a small range, यानी market gap up में ही सारी moves करेगा और intraday कुछ खास activity नहीं होगी। and the same thing can be repeated that in second half you might see one dip which again pulls back and closes at day's high। second half there is a dip and it pulls back and closes here। second half there is a dip and it pulls back and closes here। so कल के लिए मैं समझता हूं कि हमारा मेक और ब्रेक जो लेवल होगा, हम पिछले स्विंग हाई को कंसिडर करेंगे एंड बेस्ट होगा कि हम आज का जो ओपनिंग लेवल है और ये स्विंग हाई का जो लेवल है विच इज 17,400। so I think for tomorrow's session the trend deciding level is very simple, it is 17,400 and till this is holding up it's a buy on dip market, you can keep stop loss of 100 points and if we can aim to reach 17,580 as a first target and 17,660 as a second target। now remember that below 17,400, okay, market can turn bearish because we have a lot of unfilled gaps over here, so market can probably come down। in that case our first target will be 17,286 and second target will be like 17,200, that's it। so tomorrow can be very interesting, either we are going to do nothing at all or we are going to do something very very unexpected। so the potential range can be like 17,200 to 17,700 and with lot of fluctuation। so that's all for tomorrow session। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। now bank nifty, the weekly chart as you can see is still with lot of trouble, lot of resistances are still there। okay, 36,600 जो हम पहले से बता रहे हैं कि ये एक मेजर हर्डल है मार्केट के लिए, नो डाउट द सपोर्ट्स आर वेरी गुड बट इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑन वेरियस फ्रंट ये मेजर हेडविंड है इस मार्केट के लिए। सो टुडे इफ वी लुक एट द प्राइस एक्शन ऑफ
बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया. Okay, nothing much happened. So if we look at the daily chart of bank nifty, I think bank nifty is going to be very messed up for next couple of days. Why? Because uh, tomorrow, like if we open above this level, which is also the bottom, swing bottom here, so if we open above this level of say 36,450 sort of level, I think then this bank nifty can actually drive all the way till 37,300 level. Okay, now why? Because you see there is a uh, potential this breakout that might happen. Okay, uh, but I would not give this as much weightage as I would give the nature of these three candles. So these three candles, they have capacity to actually create a big candle suddenly out of nowhere. ओके, सो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए. तो अगर ऐसा होना है तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा? मार्केट सबसे पहले तो अ, आज के बॉटम को प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, तभी जाके ये पैटर्न इन वैलिडेट हो पाएगा. सो कल के लिए जो मेक और ब्रेक लेवल है, मैं इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू गो विथ today's bottom as a make or break level for tomorrow's session. तो मैं समझता हूँ कि कल के लिए हम आज के बॉटम को, यानी जो 36,150 या 36,100 है, वी शुड कंसिडर दिस एज अ मॉब लेवल फॉर टुमारोज सेशन. आई थिंक ये काफ़ी प्रूडेंट होगा. सो let me just write down the make or break level or the trend deciding level is 36,150 for bank nifty spot, and the higher targets are first targets as 36,600 and second target could be like 37,000 and third target could be 37,333. Now if there is a gap up opening, then as we discussed कि gap up के बाद try to use the VWAP, try to watch for some price action, and then you will have to decide. It will be not easy, it will be difficult, I'm saying that, but आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो. मे बी ओपनिंग कैंडल्स के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के, या आपको दिखना होगा, बिकॉज यू नो इन दिस स्टेज ऑफ मार्केट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली. सो नेवरदलेस गैप अप के ऊपर मार्केट जो है तेजी में होगा एंड मार्केट कैन स्केल दी हायर लेवल्स. अगर कल गैप डाउन होता है बट मॉब लेवल इज डिफेंडेड, ओके, देन आसानी से बाय ट्रेड होगा एंड एटलीस्ट 36,600 700 ये एक ट्रेड तो श्योरली हमें मिलेगा. ओके, नाउ ऑन द लोअर साइड, सपोज ओवरनाइट कुछ होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है. ठीक है, इन दैट केस आई थिंक मार्केट शुड ड्रॉप टिल 35,700 35,700 तक, और पहले ड्रॉप करने के बाद मार्केट वापस से कम बैक करेगा 36,200 तक. ओके, एंड उसके बाद फिर मार्केट हमको देखना होगा कि क्या करता है. ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं. बैंक निफ्टी थोड़ा सा कठिन है, और गैप अप हुआ तो ध्यान दीजिए, उसे फेड वगैरह करने के चक्कर में नहीं पड़ना है. वी ऑलरेडी हैव सीन 3 स्मॉल कैंडल डेज, and tomorrow being a crucial day, we can also see a big breakout. If I look at the line chart of bank nifty from a closing perspective, yes, there are hurdles, there are resistances. Obviously ये double bottom है on closing basis 36,950, तो ये सब हर्डल हैं, बट अभी भी वो 700 पॉइंट ऊपर है, 600 पॉइंट ऊपर है. राइट, सो अभी मार्केट को बिना किसी रिवर्सल वीकनेस के फेड करने के चक्कर में मत पड़ना. ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रंट. अब हम कुछ स्टॉक्स ले सकते हैं, कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेते हैं. एंड व्हाट इज दिस? ओके, वॉलेटाइल रहेगा, ये सबको पता है. Let us take some stock queries, and today we have seen very good move in some selected names. अगर मैं PSU बैंक इंडेक्स की बात कहूँ तो आपको याद होगा कि इस पे मैं बुलिश रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से,
एंड यू रिमेंबर इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि पीएसयू बैंक जो है ये बुलिश हैं। मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है एंड वी हैव सीन अ गुड ड्रॉप इन मेटल्स प्रॉबली मेजर रेजिस्टेंस पे तो नहीं आया था, बट मे बी some profit booking was seen. I think metals में on some higher time frame there was resistance. I just forgot. There was resistance here, so it's still okay. Then हमने कुछ ग्रुप में कुछ स्टॉक्स में जैसे बजाज ग्रुप में बहुत अच्छी रैलीज देखी है। बजाज फिनेंस 7250 के आसपास, एंड लुक एट दिस पावर गैप ब्रेकआउट हुआ है, वेरी वेरी नाइस gap breakout. So whenever you see such a price action in a heavyweight counter, तो आपको इंट्राडे इसे जो है ना लपक लेना चाहिए। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, आपको इंट्राडे ही प्रॉफिट हो जाएगा। सो काफ़ी सेलेक्टेड नेम्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। SBI has come till 495 एंड HDFC बैंक, लुक एट दिस फैंटास्टिक 2400 के आसपास HDFC, 1500 के आसपास HDFC बैंक। सो वेरी वेरी गुड मूव्स यहाँ पे आ रहे हैं। चलो लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज, लेट मी जस्ट पुट दिस बिहाइंड एंड लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज। समबडी इज आस्किंग कि टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आप मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सेंड कर दूंगा दिस टेलीग्राम लिंक। समटाइम्स दे वर्क, समटाइम्स दे डोंट वर्क, ओके। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस को अभी पता ही नहीं है कि हम नए चैनल पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो उनको भी आप शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, एंड अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप इसको पोस्ट कर देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। बहुत सारे लोग जो है सडनली दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमारा लाइव सेशन हो क्यों नहीं रहा है, जबकि हमारा लाइव सेशन दूसरे चैनल पे हो रहा है। और उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने हमारे चैनल के साथ काफ़ी छेड़छाड़ की है, तो हम लीगल एक्शन ले चुके हैं एंड वी विल वेट फॉर दैट मैटर टू गेट रिजॉल्व। चलिए बात करते हैं रिलायंस, एशियन पेंट एंड ऑल दीज। सो रिलायंस इज बुलिश एंड टारगेट इज वेरी सिंपल 2720 एंड लुक एट दिस। रिलायंस कहाँ से मैंने बाय कराया है, एग्जैक्टली इस कैंडल के बॉटम से, वेरी वेरी प्रिसाइज। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रैलीज हैज बीन कैप्चर्ड इन रिलायंस, और आप सब इसके गवाह हो कि ये बहुत ही एक शानदार पिक था। सो रिलायंस को वॉच करना, 2720 के ऊपर क्लोज करता है तो सीधे 2850 जाएगा, बट समवेयर नियर दिस 2800 ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स, क्योंकि वहां पे फिर एक मेजर रेजिस्टेंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेरी है इंडियन होटल्स। तो यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट रखना, नहीं तो फंस जाओगे आने वाले समय में। सो स्टॉक हैज ऑलरेडी मेड अ न्यू हाई, एंड एज पर माई रूल, whenever a stock makes a new high, you either trail, you partially book profit, or you do something, but you do something. नेक्स्ट जो है एनएमडीसी, भाई साहब ने शॉर्ट कर दिया है। एनएमडीसी क्यों शॉर्ट किया है? एनएमडीसी 175 तक का मेरा टारगेट है और मैं एनएमडीसी में बुलिश हूँ, बाय ऑन डिप्स की सलाह है। नेक्स्ट है टीवीएस मोटर्स। So TVS Motor Company, let me pull up the chart. So this is almost about to give some breakout. अच्छा, ब्रेकआउट से याद आया कि अभी थोड़ा ध्यान देना कि आपको हर जगह ब्रेकआउट दिखाई देगा, ठीक है, और बहुत सारे लोग ब्रेकआउट की बात करने लगेंगे। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ब्रेकआउट्स जो है 90% ब्रेकआउट्स बकवास होते हैं। दे जस्ट हैपन बिकॉज राइजिंग टाइड लिफ्ट ऑल बोट्स, यानी बाजार अगर तेजी में आ गया तो बहुत सारे स्टॉक टेक्निकली ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं कि उन्हें ब्रेकआउट करना आसान होता है, सो दे जस्ट डू द ब्रेकआउट। वो रियल सेंस में ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है। सो इस चीज़ से थोड़ा बचना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में आपको ब्रेकआउट वगैरह जो है दिखाई देंगे, ओके। Now, as far as this stock is concerned, I think couple of days back we discussed that stock मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, but probably this flag breakout can happen. So अगर आपने इसे buy किया है तो ये आप stop loss रख दो. This is a very nice cushion. We have all the three moving averages here. So I think it's okay. 600 के नीचे का stop loss लेके you can buy and hope for the best. And we have lot of space on the left hand side. We can move till 660 level, and that is where profit should be booked. नेक्स्ट क्वेरी है रिलैक्सो बाइंग, रिलैक्सो फुटवेयर्स। तो ओके, रिलैक्सो फुटवेयर्स डाउन ट्रेंड में है काफ़ी महीनों से। सो राइट नाउ स्टॉक इज जस्ट डूइंग अ टेक्निकल पुल बैक। एनी रैली दैट कम्स मस्ट बी यूटिलाइज टू एग्जिट इन द शॉर्ट टर्म। इन द शॉर्ट टर्म
आई डोंट सी दिस स्टॉक क्रॉसिंग 1160. टाटा पावर में लॉन्ग किया है. ओके, सो टाटा पावर में काफ़ी बुलिशनेस, लाइक पब्लिक की बुलिशनेस है, स्टॉक की बुलिशनेस अभी नहीं है. सो स्टॉक राइट नाउ व्हाट इट कैन डू, इट कैन क्रिएट अ ब्रेकआउट, दैट्स इट. तो और कुछ नहीं कर सकता. आप यहाँ पे अगर लॉन्ग हो तो आपको ट्रेल करना चाहिए 227 पे. टाटा पावर पे बड़ा पर्सपेक्टिव मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि मुझे या तो यहाँ इंटरेस्ट है या मुझे यहाँ इंटरेस्ट है. एक बार ये यहाँ आया था तो यहाँ मैंने बाय दिया था, एक बार यहाँ आया था तो यहाँ पे बाय दिया है. अब जब ये ब्रेकआउट वगैरह करेगा तो फिर मुझे नेक्स्ट इंटरेस्ट. आई डोंट लाइक टू प्ले इन बिटवीन. टाटा पावर का पूरा लॉन्ग टर्म सारा एनालिसिस मैंने लास्ट ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स के साथ किया था, और उस टाइम लाइक इट वाज समवेयर हियर, I remember, and I had told the same thing that buy this stock near 200, stop loss 180, and this stock should do 320. यानी ये स्टॉक अभी भी ब्रेकआउट नहीं किया है, और मैंने इसे एक महीने पहले घोषित कर दिया है कि ये ब्रेकआउट करेगा 200 पे बाय और 180 का स्टॉप लॉस. वेरी सिंपल. आईटीसी की बात करते हैं तो आईटीसी में आज थोड़ा सा एक गिरावट आया है, नथिंग टू वरी. ओके, और जिनको आईटीसी नहीं मिला था लास्ट टाइम, आप जो है वेट करिए. अगर आपको 233 वगैरह पे मिलता है तो आप बाय कर सकते हो. इन काउंटर्स में कैश में ट्रेड करना, एफएनओ के ट्रेड्स अलग होते हैं. नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ग्रेविटा इंडिया, और ग्रेविटा something, yeah, Gravita India. So this stock, be careful, okay. And the stock is right now in a sliding position, and I think stock can go little down towards 300 etc. But very soon stock, it can reverse. तो अगर इसमें लॉन्ग ट्रेड आपका है तो आप इसको स्टॉप लॉस लेके चलो 289 को. एंड आई थिंक व्हाट दिस स्टॉक विल डू इज it will simply do sideways and then it will reverse like this. ठीक है, so that is why this is a very nice stop loss. अगर ये स्टॉक आपको सपोज 305 वगैरह पे किसी दिन मिलता है, किसी को आउटराइट ट्रेड लेना है तो 280 के स्टॉप लॉस से ले सकते हो, बट ये कंपलसरी स्टॉप लॉस है, इट्स अ मस्ट. ओके, सो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कैन हैपन हियर. ठीक है, एंड अर्निंग्स भी आ रही है, सो अर्निंग्स के समय जो है देखना. तब तक मैं समझता हूँ ये हो सकता है ऐसे ही चले इन दिस चैनल. ओके, नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है अदानी पावर, अदानी पावर लिमिटेड. सो अदानी पावर लिमिटेड, लेट मी सी. सो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एकदम बम्पर चलते हैं. स्टॉक हैज ऑलरेडी मेड अ न्यू स्विंग हाई, तो प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली आ जाता है. दैट इज माय पॉलिसी, सो यू शुड बुक प्रॉफिट हियर. नाउ इफ यू वांट टू ट्रेल, यू वांट टू टेक अ चांस, तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है. आपको इस कैंडल के नीचे 154 के नीचे आपको ट्रेल करना होगा. So if you are willing to trail, you can take your chance, or else you can book, or you can partially book and trail the balance over here. On the higher side, if it starts to like go vertical, then the stock can very easily test the 210. ठीक है, so ये व्यू है इस पे. 154 पे ट्रेल आई थिंक एक बेटर ऑप्शन होगा. मिंडा कॉर्पोरेशन, मिंडा कॉर्प इज द नेक्स्ट क्वेरी. हिमाद्री केमिकल्स, टाइटन, बहुत सारे क्वेरीज हैं. सो मिंडा कॉर्पोरेशन राइट नाउ आई थिंक ठीक है, हैज गिवन सम चैनल ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ थिंग. आई थिंक इट इज स्टिल अभी थोड़ा सा टाइट है ये स्टॉक. टाइट का मतलब भगवंत मान वाला टाइट नहीं, मतलब इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग ओनली. अभी कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अगर आपने बाय किया है तो ठीक है, यहाँ कहीं बाय कर लो. 189 इज अ गुड लेवल, and stop loss हो जाएगा 175. But make sure that whenever it reaches the 232 level, that is the place where you should exit. So 190 buy, 170 stop loss, 230 target, and whenever 230 comes, book out. All right. मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि स्टॉक अभी काफ़ी दिन जो है ना यहाँ पे चॉप अराउंड करेगा. नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है सन फार्मा फॉर लॉन्ग साइड. सो सन फार्मास्यूटिकल इस समय लॉन्ग तो कहीं से भी नहीं है. पहले का लॉन्ग है तो आप ट्रेल कर सकते हो, बट राइट नाउ इट इज एट अ बुकिंग स्टेज. तो लॉन्ग करने के लिए गिरावट चाहिए. गिरावट यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, तो कोई लॉन्ग नहीं है. पहले का लॉन्ग है या ऑलरेडी लॉन्ग में है
तो आप या तो प्रॉफिट बुक करिए समवेयर नियर 940, 940, 940, 940, और यू ट्रेल टू 890। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है हेवल्स इंडिया लिमिटेड। सो हेवल्स इंडिया इस समय मैं क्या कैसे बताऊं, ये स्टॉक के मल्टीपल व्यूज हैं। ठीक है, लेट मी ट्राई। सो ये स्टॉक को देखो डील करने के बहुत सारे सिचुएशन है राइट नाउ। आई थिंक इस स्टॉक में आप ये कर सकते हो कि आप इसे बाय कर सकते हो, या तो आप इसे थोड़ा नीचे बाय करो। इट्स लाइक बाय near 1100, keep a stop loss of this, or you can keep a stop loss of say 50-60 points here, एंड पहला जो टारगेट होगा इस स्टॉक में 1250 का होगा, दैट्स इट। इसके अलावा इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ मैं अभी नहीं कह सकता, ठीक है। सो दैट्स द व्यू। सो इसमें कोई गिरावट आती है तो आप बाय कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, इस बात का ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेरी है मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल। दोस्तों एक और बार रिमाइंड कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ऑडियंस हौच पौच हो चुके हैं। सो नेक्स्ट ट्रेनिंग इज scheduled on April 16th and 17th, and try to register as early as possible so that you are added in the Telegram group, and you can benefit in a variety of ways by being in the group. ओके, सो मोतीलाल ओसवाल दोस्त, इसमें कुछ खास नहीं है। अगर आपने बाइंग की है तो आपको 800 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। सो द स्टॉक प्रोबेबली इफ इट हैज नेगोशिएटेड द resistance or the supply, this is the most important support, so probably it can come and go up like this. Okay, so बस इसलिए मैंने कहा कि इसको एज अ स्टॉप लॉस रखो, बिकॉज इफ दिस हैज टू हैपन ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। नेक्स्ट जो लेवल है, नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज कोटक बैंक। सो कोटक बैंक, लेट मी सी कोटक बैंक। Okay. So Kotak Bank right now it is just at support, and 1840 should come. ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि कोटक बैंक को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कोटक बैंक अगर आपको मिलता है यहाँ पे 1700 के आसपास, तो 1650 के स्टॉप लॉस से आई थिंक एक ट्रेड टुवर्ड्स 1820 इज अ गुड ट्रेड। ओके, नाउ एट दिस लेवल ऑफ 1820 there will be lot of resistances. Okay, so that is why ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, दैट्स इट। ये एक ही ट्रेड इस समय है स्टॉक में। 1700 पे बाय करो, 1640 को स्टॉप लॉस लगाओ, और 1820 प्रॉफिट बुकिंग। अगर 1820 को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात होगी, इन दैट केस 1920 तक जा सकता है, बट 1820 इज अ प्रॉफिट बुकिंग लेवल। सो that's about it. Next is Himadri Chemical, Himadri Specialty. So ये स्टॉक में एक एक्सप्लोजन हो गया है, स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह हैं। सो दिस इज गिवन ब्रेकआउट। सो आई थिंक इस स्टॉक में अभी आप क्या कर सकते हो, बैक टू बैक ब्रेकआउट्स है, तो 80 रुपीज़ के आसपास थोड़ा सा आप जो है इसको प्रॉफिट बुकिंग देखना। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक को थोड़ा 96 रुपीज़ तक होल्ड करना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक it has potential to go till 92 rupees, 95 rupees. So if you are an early buyer, अगर आपको पहले ये मिला है तो मैं समझता हूँ थोड़ा इसको ट्रेल करो 58 रुपीज़ पे एज ऑफ नाउ, इसको ट्रेल करो टिल दिस 92 95 लेवल्स डोंट कम। ये एक चीज़ इसमें की जा सकती है। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट, सी अल्ट्राटेक, अंबुजा और ये जितने सीमेंट वाले हैं सब बेरिश हैं, और अभी टेक्निकल पुल बैक हो रहा है। और अल्ट्राटेक की बात करें तो ये 7120, सॉरी 7020 तक जा सकता है, जहां से टूटा था। रीटेस्ट ऑफ दैट लेवल 7020 और प्रॉबली 7100 के आसपास जा सकता है। These are all bearish counters right now. They are just doing a technical pullback. नेक्स्ट स्टॉक है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। तो ये देखो, ये स्टॉक ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग जोन पे है, तो इसमें या तो प्रॉफिट बुक करो या फिर 68 रुपीज़ पे ट्रेल करो एंड 85 रुपीज़ पे प्रॉफिट कर लेना। ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेरी है LTI, लार्सन टुब्रो इंफोटेक। सो LTI is a
गुड काउंटर इन माय व्यू। एलटीआई को अगर आप थोड़ा स्टॉप लॉस 5600 का ले सकते हो तो एलटीआई इज अ बाइंग कंटेंडर, ठीक है। एलटीआई इज अ बाइंग कंटेंडर, और ये किसी भी दिन जो है ब्रेकआउट वगैरह, ब्रेकआउट इन द सेंस दैट इट कैन स्टार्ट टू मूव अप। सो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, 200 डे मूविंग एवरेज है, काफ़ी ठीक है, काफ़ी बढ़िया चार्ट मुझे ये लग रहा है। हालांकि सिर्फ ये डबल टॉप का थोड़ा कंसर्न है, बट आई थिंक नेवरदलेस एटलीस्ट सम रैली कैन कम टिल 7100 लेवल। ओके, सो एलटीआई जो है अगर आपको थोड़ा मिले, सपोज आपको ये स्टॉक मिलता है 6100 पे, तो इसे आप बाय कर सकते हो। प्रॉब्लम यही है कि स्टॉप लॉस बहुत दूर है, लाइक स्टॉप लॉस इज नियर 5600। ओके, सो टेक योर कॉल, जजमेंट लो। नेक्स्ट क्वेरी है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो इज द नेक्स्ट क्वेरी। हिंद पेट्रो अगर हम देखें तो दोस्त पूरी तरीके से बेरिश है ये काउंटर, इनफैक्ट बीपीसीएल भी बेरिश है। सो काउंटर बेरिश है, अगर कोई जंप आता है तो 288 रुपीज़ के ऊपर जंप नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेरी है बायोकॉन लिमिटेड। सो बायोकॉन इज जस्ट ओके ओके, आई मीन बायोकॉन में कोई बड़ा ट्रेड ऐसा नहीं है, बट इफ यू आर अ लॉन्ग ट्रेडर देन कीप 320 और 315 एज अ स्टॉप लॉस। दिस स्टॉक will once holding this recent bottom of 320 315, this stock should come near 370 first. So stock will come 370 first before any bad thing happen. That is what I mean to say. So अगर इसमें आप सपोज पहले का पोजीशन है, या सपोज यहाँ अगर आपने बाई किया है, तो इन ऑल सेंस लाइक यू कैन होल्ड इट, कोई इशू नहीं है। 315 वगैरह एक अच्छा स्टॉप लॉस है, एंड आई थिंक 378 शुड कम वंस बिफोर एनी न्यू लेग ऑफ मूव बिगिंस। टीसीएस एक्सप्लेन कर चुका हूँ परसों या उसके पहले के वीडियो में। सो टीसीएस इफ यू आर अ बायर हियर इमीडिएटली कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 3650 3640 एंड इमीडिएट टारगेट होगा 3900 का। नेक्स्ट जो है मुथूट फाइनेंस पे एक ट्रेड है। मुथूट फाइनेंस पे किसी ने शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। देखो शॉर्ट में फंस जाओगे दोस्त, ठीक है, स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। सो कट योर शॉर्ट, स्टॉक आई थिंक इज गेटिंग रेडी फॉर अ काउंटर मूव टुवर्ड्स 1400 1420 लेवल। शॉर्ट यहाँ नहीं करते ना यार, यहाँ यहाँ आप शॉर्ट करके क्यों फंसना चाहते हो? मार्केट बुलिश हो रहा है यहाँ पे, ये कोई जगह ही नहीं है शॉर्ट करने की। लुक एट दिस, यू हैव this as a support, you have this as a breakdown, you have this as a resistance. So this is not the place to short. The place to short will come here, okay, when it moves, and this is a such a strong hurdle for the stock to cross, which it can't cross. So आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ शॉर्ट करो 1400 के आसपास, ताकि अगला ड्रॉप आए 1225, एंड आई थिंक ओवर देयर इट विल बॉटम आउट। नेक्स्ट क्वेरी, अच्छा आपने 1500 पे शॉर्ट तो कवर करो, फिर तो इनफैक्ट आपको कवर कर लेना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है इन्फोसिस has given that breakout after a long time, but I really doubt about this stock, so kindly trail to your longs, and that's all I can say. एसबीआई इज बुलिश। एसबीआई हर बार मैं रिकमेंड करता हूँ 440 पे बाय करना है, 530 पे सेल करना है, and SBI I am bullish, and SBI also should start one more round of up move, and let us see till where it gets. So overall अगर कैश में इन्वेस्टमेंट किया है अराउंड 450 के आसपास, then I think it should be held, and just like here we made a minor swing high as compared to this high, I'm expecting the same thing to happen. So I won't be surprised if we see SBI near 560 level in the near future. Okay, next query है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, and guys we are approaching the 1 hour time limit, so I will have to wind up. आरती इंडस्ट्रीज में दो ट्रेड बताता हूँ मैं। पहला ट्रेड कि शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दे रहा है, which is this,
सो इफ यू आर अ बायर या आपको बाय करना है तो यहाँ पे बाय करो, बट स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 880 पे। सो 880 पे आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड इसका जो टारगेट निकल के आएगा ये टारगेट होगा 1000 रुपीज के आसपास मिनिमम। ओके, सो ये एक ट्रेड है एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट क्वेरी आई कैन टेक इज नेस्को। ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम किसी ने नेस्को पूछा है। सो नेस्को में आज लगता है कुछ हलचल हुई है। स्टॉक को देखो, स्टॉक पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में ही रहा है। सो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। आई थिंक स्टॉक जब तक इस पूरे डाउन ट्रेंड को नेगेट नहीं करता, these moves, they should be taken with a pinch of salt. So Nesco, I think technically it's in a downtrend and you should exit somewhere near 580. Let this trend morph into a new uptrend and probably then we can start thinking of taking the long side trade in future. Okay, so for the time being it is a exit opportunity, especially if you are stuck in this trade. Amrit, yes, it is a exit. I hope it is clear now. Genus Power, लेट मी सी। जीनस पावर ठीक है, जीनस पावर में देखो बने रहो। स्टॉक ने एक अच्छा बेस किया है, स्टॉक ने गैप के साथ ब्रेकआउट किया है। सो आई थिंक जीनस पावर में बने रहो, यहाँ पे रिस्क लेना वर्थ है। किसी को अगर फ्रेश बाय करना है तो आप कर भी सकते हैं 71 रुपीज़ के आसपास, और स्टॉप लॉस भी इतना कुछ बड़ा नहीं है। आई थिंक यू कैन कीप 60 रुपीज़ एज अ स्टॉप लॉस, एंड इसमें टारगेट हम ले सकते हैं काफ़ी ऊपर का टारगेट, इसमें 90 रुपीज़ एंड प्रॉब्ली 100 कैन ऑल्सो कम। ओके, सो ये अपडेट है इस स्टॉक में। टाटा एलेक्साई हैज ऑलरेडी मूव्ड अप सो मच, सो फ्रेश तो इसमें आप बाइंग कुछ नहीं अभी कर सकते, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेरी आई हैड इज एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक भी 735 एंड ऑल दीज लेवल्स आर डन। एक्सिस बैंक में यू सी दी एक्सिस बैंक 765 भी आ चुका है, 735 कल था आई थिंक। या सो एक्सिस बैंक, आई थिंक दीज आर ऑल बुलिश काउंटर्स। एक्सिस बैंक थोड़ा और ऊपर जाएगा 795, आई थिंक इट शुड डू वेरी वेरी सून 795 785 ऑल दिस लेवल्स। ठीक है, yeah, so that's all. I think I have taken all the queries. Sinclair, what is this? Sinclair something, सिंक्लेयर होटल्स और समथिंग, सिंक्लेयर होटल्स। ओके यार, सब लोग ये होटल्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? ठीक है, बहुत फिशी है। ओके, सो सिंक्लेयर होटल्स, देखो आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो रेजिस्टेंस पे आ चुका है प्रॉफिट बुकिंग करो राइट नियर 102 105, और इफ यू हैव सम न्यूज़ अबाउट इट, यू वांट टू ट्रेड, यू वांट टू ट्रेल, तो आपको ट्रेल करना होगा 81 रुपीज़ पे। मेरे ख्याल से इन सब स्टॉक से दूर रहना, एंड इफ यू आर गेटिंग गुड मनी जस्ट एग्जिट ऑल दिस काउंटर्स, these counters are not trustworthy. Next and आखिरी क्वेरी मैं लेता हूँ आज के लिए, वो है विप्रो। We have completed 1 hour of live stream. So Wipro is doing nothing. Wipro, you see this was the support और ये यहाँ पे जो है अटक चुका है। So Wipro में अगर आप पहले से लॉन्ग हैं तो यहाँ पे ट्राई कीजिए एग्जिट करने का। इसमें अगर अपमूव आता भी है तो 628 के ऊपर ये स्टॉक अभी तो ये नहीं जाने वाला है। ओके, दैट्स द अपडेट। सो सपोज अगर विप्रो लास्ट टाइम अगर आप यहाँ कहीं फंसे हुए थे तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लोज टू योर कॉस्ट। एक दो दिन आप देखिए, ये हो सकता है एक पंप मारे 630 के आसपास, जहाँ पे फॉर द टाइम बिंग वी शुड एग्जिट। इसमें फ्यूचर में एक ट्रेड अच्छा निकलेगा। फ्यूचर में ये ट्रेड आएगा कि 575 पे बाय with a stop loss of 540 for a target of 680। ठीक है, ये विप्रो में अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक ट्रेड आएगा भविष्य में। 580 पे बाय, 540 का स्टॉप लॉस, टारगेट 680। दैट्स इट। बीपीसीएल अभी बेरिश है, अभी कुछ नहीं कह सकते बीपीसीएल में। और अदानी पोर्ट्स की बात हो रही है तो अदानी पोर्ट्स बुलिश है। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि अदानी पोर्ट बुलिश है। सो 800 का लेवल बहुत जल्द इसमें आ जाएगा अदानी पोर्ट्स में। ठीक है, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। आई थिंक 1 hour लाइव स्ट्रीम इज ओवर। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जिसको नहीं मिल रहा है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट ट्रेनिंग इज ऑन April 16th and 17th।
जल्द से जल्द आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय माता दी।